Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav. Welcome to another episode of Daily News Analysis that we do from Monday to Friday. So I welcome each and everyone here and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. And as I told you in each and every session, why is newspaper is important? Because most of the current affairs question, the source is newspaper. So majorly what we discuss like the Hindu, Indian Express, that is two prominent newspaper, and newspaper से आपको एक idea होता है कि what is happening around us, right? And one humble request, if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not subscribe and please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. So as we know, daily news analysis, what exactly we discuss? We did discuss about national news, international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news. Then apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament, and being like if you are preparing for the law entrance exam like CLAT, AILET, SLAT and Jamia law, so it is very important to know about in order to complete your syllabus and for the legal aptitude as well. So this is very important, right? Because this will gives you an idea कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पता होता है कि करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें हमारे टॉपिक्स में सो ये सारी टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम में क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए, सो कोट जो है हमारा आज का कोट, नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग बट एनी वन कैन स्टार्ट टुडे अ मेक अ न्यू एंडिंग. और ये जो अपना है ये आपको इन ईच एंड एवरी सेशन आई हैव डिस्कस्ड कि न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज कई बार जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट उस न्यूज़ में आपको बार बार एक ही टाइप की न्यूज़ मिलेगी वहाँ पे. तो इफ़ देयर इज़ एन रेपुटेशन ऑफ न्यूज़ यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है. ठीक है, एक बार उसके नोट्स बनाओ, दैट्स इट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज़राइल पैलेस्टीन वॉर है, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर में उसके डेली आर्टिकल्स आते हैं. हमें नहीं करना है, हमें उसकी जो बेसिक निटी है वो हमें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट्स इट. एंड क्वेश्चंस ऑफ द डे है, सो विल आस्क द 5 क्वेश्चंस एंड क्विक टिप्स में जो आज हम नेमोनिक्स के हेल्प से, बिकॉज नेमोनिक्स से क्या होता है जो आपको एक शॉर्ट टेक्निक से आप उस चीज़ों को लर्न कर पाते हो. सो दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन यूजिंग द मेमोरी टेक्निक्स. ठीक है, वो हम अभी आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. एवरीडे हम आपको नेमोनिक्स टेक्निक से कुछ न कुछ न्यू टेक्निक से हम आपको बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज IITM पुणे डेमोन्स्ट्रेट क्लाउड सीडिंग दैट कैन प्रोड्यूस रेनफॉल. तो आपको ये टेक्निक्स जो है क्लाउड सीडिंग के ऊपर ये इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बट कैसे? बट इसके अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट की अगर बात करें, दैट प्रोड्यूसिंग वाटर थ्रू क्लाउड सीडिंग दैट वाज 18 पैसा per liter, and the cost will drop by more than 50% if you use indigenous seeding aircraft. So clouds seeding experiments that were carried out in the Solapur city, which gets less rainfall from June to September 2018 to 2019. So a cloud seeding experiment जो है वो सोलापुर में किया गया था, राइट. सो वहाँ पे लोवेस्ट रेनफॉल हुए थे कितने, 384 मिलीमीटर से 384 से लेके 422 मिलीमीटर तक रेनफॉल हुआ था वहाँ पे. एंड ऑब्वियस इट वाज नॉट एबल टू अचीव 18% रिलेटिव enactment in the rainfall, which is approximately 8.67 millimeter more rainfall. ये जो एक्सपेरिमेंट है क्लाउड एरोसॉल इंट्रैक्शन होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहते हैं CAI-PEFX phase 1. So it was a scientific investigation conducted in Solapur city during the summer monsoon period of 2018 to 2019. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? So the primary objective was to investigate the efficacy to hydroscopic seeding in deep convective clouds and develop a cloud seeding protocol.
इसके लिए हमें 2 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, दैट फ्लेयर वॉज यूज फॉर सीडिंग द क्लाउड एंड अ क्लाउड सीडिंग फ्लेयर रिलीज दीज पार्टिकल्स व्हेन ट्रिगर्ड। सो उसमें क्या होता है, जो सीडिंग होता है दैट वाज डन एट द बेस ऑफ द वार्म कन्वेक्शन द क्लाउड्स एट द टाइम व्हेन द क्लाउड्स वर इन द growing stage, right? And that the seed particles cloud enter the cloud with minimum dispersion. So one of the most important findings of the study was that not all cumulus clouds produce rainfall, right? When cloud seeding is done, we found 20-25% of the cumulus cloud that produce rainfall. So if cloud seeding is done correctly, the microphysics of the cloud that vary widely, and so not all clouds produce rainfall through cloud seeding. Make sure जितने भी टाइप के clouds होते हैं सब में cloud seeding process से आप rainfall possible नहीं है। तो जो कॉस्ट है यहाँ पे हमारा बहुत कम है। सबसे पहले आपको एक मैकेनिज्म को समझना होगा कि क्लाउड सीडिंग कैसे काम करता है। इसमें अगर आप देखिए, फर्स्ट में सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज बाय अ प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स के थ्रू। प्लेन के थ्रू हम सिल्वर आयोडाइड को रिलीज करते हैं पहला प्रोसेस में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स होते हैं इज द टारगेटेड क्लाउड्स, इस क्लाउड तक हम पहुंचते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो सिल्वर आयोडाइड है दैट एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। आपको पता है कि जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन के लिए आपको वाटर वेपर इज इम्पॉर्टेंट। जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं दैट बिकम लार्ज इनफ टू फॉल एंड क्रिएट स्नो। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है और ह्यूमिडिटी से फिर क्या होता है हमारा यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट्स। सो दिस हाउ इट क्लाउड सीडिंग वर्क्स, राइट। और ये प्रोसेस जाना इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज being as parents you should know and you should know, must keep an eye on that things which is very very important, right। चलो उसके बाद हम अगर यहाँ पे जाने की कोशिश करें तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं किस चीज़ के ऊपर है। सेकेंड आपका है कि वाई विल पुलिस स्टेशन इंस्टॉल डीएनए सिस्टम। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, व्हाट आर द कंसर्न्स, वाई हैज़ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो caution against the misuse of database by ensuring identification and deployment of appropriate safeguards, allowing only designated officials to access the data in real time। देखो, इसके लिए आपको थोड़े से पास्ट को समझना होगा। जब भी कोई इस टाइप की न्यूज़ हो आप देखो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और एग्जाम में इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। जैसे ये टॉपिक है आपका, इस टॉपिक पर आपके सबसे पहले ये सोचना होगा इस टॉपिक के ऊपर कि वाई वॉज द लेजिस्लेशन ब्रॉट इन, what was the role of National Crime Record Bureau, and what is the status on the ground, and what can be the challenges to implement this. The story that was so far in April 2022, the Criminal Procedure Act CRPI that was passed in Parliament, and इस act से enable police and central investigation agency to collect, store and analyze physical and biological samples including रेटिना एंड आइरिस, जो आंखों के अंदर होती है उसको स्कैन करते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड मेकिंग अ प्रोसेस है। एंड द रूल्स दैट वुड गवर्न द एक्ट वर नोटिफाइड इन सितंबर 2022। हाउएवर द एक्ट इज येट टू इम्प्लीमेंटेड fully as the National Crime Record Bureau, the nodal agency that is still preparing the guidelines and standard operating procedure to implement the legislation। इससे आपको ये भी देखना होगा जो आपका NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट ऑपरेट्स अंडर MHA। ये क्यों कौन ऑपरेट करता है माय फ्रेंड्स, ये आपको करता है MHA विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो दो द एक्ट एंड रूल्स डू नॉट डिस्टिंक्ट मेंशन द कलेक्शन ऑफ DNA सैम्पल्स एंड द फेस मैचिंग प्रोसीजर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें है आपका वाई वॉज द लेजिस्लेशन ब्रॉट इन। पहली चीज़ जो CRPA है आपका, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, that repeal the British era Identification of Prison Act 1920। इसका नाम है Identification of Prison Act 1920, whose scope was limited to collecting and recording finger impressions, footprint impressions and photographs of certain category of convicted persons and impression of non-convicted persons on the orders of magistrate। So what was the role of NCRB? NCRB का इसमें रोल क्या है? So basically this is a kind of central body that has entrusted with the task to store, process,
share, disseminate and destroy records of measurements. And जो impressions ली जाती हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, that will be stored in a common database maintained by the NCRB, National Crime Record Bureau. ये जो database है that could be accessed by authorized police and prison officials across the country. तो यहाँ जो NCRB है that will prescribe the specification of equipments of device to be used for taking measurement in digital and physical format. क्या है अभी ग्राउंड स्टेटस? अगर बात करें यहाँ पे जो पुलिस अक्रॉस स्टेट दैट हैव बीन ट्रेन टू रिकॉर्ड फिंगर इम्प्रेशन थ्रू द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसे हम कहते हैं नाफीस। कई बार आपके एग्जाम में नाफीस के फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आपको ये नाफीस याद रखना। हमारे जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं जो पुलिस हैं वो उसका यूज़ करते हैं नाफीस सिस्टम का। अभी नाफीस क्या होता है मैंने आपको बताया, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ऑटोमेटेड fingerprint identification system. This is called NAFIS. But फिर भी several police officials said that iris scanners and device that would enable capturing of DNA and facial recognition system that are yet to provided. Challenges क्या हो सकते हैं? Because ये बिल जो है डिबेटेड है इन पार्लियामेंट में, अपोजिशन मेंबर्स आर्ग्यूड दैट इफ violated fundamental rights including right to privacy, which is Article 21 of the Constitution, and with plans to include DNA samples and facial recognition technology. So questions arose about the protection of such data. एक पुलिस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में ने ये जी बताया कि जो the rules state that measurement of person detained or arrested under prohibitionary and prevention section of laws are not to be recorded, not many officers are aware of it. It takes the destruction disposal of records of an individual from the central database in case a person has been falsely implicated in a crime or has been acquitted by the court. Right? तभी इसके ऊपर एक दूसरी पुलिस मैन का ये कहना है कि handling DNA samples requires proper training. The storage is also a concern. It is compulsory in offences registered under Protection of Children from Sexual Offences Act, POSCO Act. However, what is the scope in other crimes such as cheating and snatching is yet to be spelled out clearly. तो ये अभी बात चल रही है, right? So it is plans to include DNA samples and facial recognition technology. Let's move to the next one. इस आर्टिकल में आपको क्या चीज़ जाननी चाहिए? What's in store for economy in second half? Could the West Asia flare up push oil prices that further up and disrupt food and fertilizer supply lines? Second thing that you should know about how many fraught geopolitical events that rising risk aversion, higher interest rate and that volatile market impact India and have domestic concern about inflation faded. बात करते हैं यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी है दैट मेजर टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एज वेल एज ग्रॉस वैल्यू एडेड GDP एंड GVA. GVA में आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स को भी कम काउंट करते हैं, राइट? सो इस मंथ में जून से अप्रैल से जून के बीच में अब 4 क्वार्टर हाई था हमारा, तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट बिलीव्स मोमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर क्वार्टर्स को कि इन्फ्लेशन रेट क्यों इतना हाई हुआ. So economists feel a prolonged conflict in the West Asia that could push crude oil prices beyond India comfort zone and if other countries join the fray, so that critical seas routes could face disruption and spike transport and insurance cost. जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनका ये कहना है कि इन हर फर्स्ट रिमार्क सिंस द स्ट्राइक ऑफ गाजा said it has brought concern about the food security and supply chain back to the forefront, and she flagged concern about the impact of disruptions on inflation in the near future. RBI गवर्नर जो हमारे शक्तिकांता दास जी हैं, who chaired a monetary policy review that hours before हमास ने लॉन्च किया फर्स्ट सैल्वो इन द कन्फ्लिक्ट. और ऑब्वियसली इस वॉर की वजह से क्या होगा कि इन शॉर्ट जो ऑयल प्राइसेस होंगे वो राइज होंगे. सो इज देयर शिफ्ट द असेसमेंट ऑफ रिस्क इन द इकोनॉमी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF
दैट रेज 2023-2024 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया इंडिया के लिए, और वो आईएमएफ ने कितना करा है इंडिया के लिए 2023-2024 में 6.3% दिस मंथ, एंड this is just slightly below the 6.5% of GDP. So यहाँ पे what are the domestic factors to watch out for? Indian inflation that maybe is यहाँ पे subsided last month, but that could creep back to the, because RBI का जो हमारा concern होता है इन्फ्लेशन के लिए, जो RBI जिसके उनके बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बिकॉज RBI बिलीव करती है इस चीज़ पे कि द एवरेज इन्फ्लेशन है दैट इज़ 5.4% थ्रू 2023-2024 में, राइट. सो अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में 5.2% फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2024, वाइल सम वेजिटेबल प्राइसेस हैव ऑब्वियस हायर. तो ऑब्वियस इसके लिए RBI की जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इसके ऊपर डिसाइड करती है. चलिए नेक्स्ट है मोस्ट जेंडर इक्वल आइसलैंड सी वुमेन्स स्ट्राइक हियर व्हाई. क्यों ऐसा हुआ? See, women of Iceland that went on 24-hour strike on Tuesday to protest against gender discrimination. अब सोचेंगे जो वहाँ पे जेंडर इंडेक्स में रैंक 1 पे होता है. सो आइसलैंड इज अ यूरोपियन आइलैंड नेशन. जो आपका आइसलैंड है, जो आइसलैंड है ये आपका कौन सा है? यूरोपियन आइलैंड है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के पास आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास. सो अब इन शॉर्ट यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है. अगर आप लगाएं तो ऑलमोस्ट लेस देन 4 लाख की पॉपुलेशन है आपकी आइसलैंड की. सो इट्स वुमेन हैव मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द वर्कफोर्स एंड लेजिस्लेशन बैकिंग द राइट टू इक्वालिटी. Many of these benefits came after a nationwide Women's Day of observed on October 24th. इस country में 1975. 48 years, 2 key areas of the concern: pay gap and gender-based violence. 2 issues हैं यहाँ के women में. पहला होता है pay gap, and second one is gender-based violence. Gender-based violence. So women still earn 21% less than men, and more than 40% of women have experienced gender-based sexual violence. So in short अगर देखें यहाँ पे तो वहाँ की जो PM है that is catering, उन्होंने women strike को ज्वाइन किया. 1975 के स्ट्राइक की बात करें तो the 1975 day off saw the participation of almost 90% of the island working women. चलिए अब बात करते हैं इस आर्टिकल में, वुमेन कैन मेक अ वर्ल्ड बेटर, बट हाउ? देखो ये पॉसिबल कैसे है. इकोनॉमिक हिस्ट्री हैज लॉन्ग बीन क्रॉनिकल थ्रू मेल लेंस, emphasizing the contribution of men and their viewpoints. Just look at the Nobel Memorial Prize in Economic Science. It has been awarded to 90 men since 1969. 1969 से 90 men को नोबेल प्राइज मिला है, and just 3 women. उसमें women कितने हैं? 3 are only women. First, Elinson Ostrom that won in 2009 for explaining how local communities, most of them in developing countries, govern themselves. Second था हमारे Esther Duflo that won 2019 for the experiment work in alleviating global poverty. और अभी जो लास्ट में मिला इकोनॉमिक्स के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को, दैट इज़ क्लाउडिया गोल्डिन. और इनको जो है क्लाउडिया गोल्डिन को दैट थर्ड वुमेन अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, दैट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स in the year of 2023. So economic sciences is focused on studying system for producing economically valuable goods and service efficiently. Nature and human resources that are measured by economists in money terms. Claudia Goldin को award दिया गया for her work explaining why women earn less money than men even they do the same work. Same काम करने के बावजूद भी women को कम क्यों दी जाती है? So the future of work in India. So more employment is being generated now in the gig economy. Gig economy, my friends, आपका एक short economy होती है, right? So जो gig economy है and the informal sector, even in the large industrial establishment,
jobs on short-term contracts. So these trends in the future of works are a special challenge for India, which has the largest number of youth in the world. So they are finding fewer opportunity for dignified work with adequate income and social security, even though our Indian economy is among the fastest growing in the world. Moreover, you should know about कि India, which ranks 132 of 192 countries, the developing nation, that need to invest more in caregiving service. और जो caregiving work है, that is not valued in the money economy. जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, फॉर द विमेन एमेंसिपेशंस के लिए, यहाँ पे केरला गवर्नमेंट है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लीव की बात हुई है, राइट. सो इन शॉर्ट यहाँ पे देखो 1969 से अभी तक में आपको 3 वेमेन हैं जिनको अभी तक में नोबेल प्राइज़ मिला, जिनके तीनों के नाम मैंने बता दिया आपको. एंड दिस ईयर 2023 में नोबेल प्राइज़ एंड इकोनॉमिक साइंस दैट वाज गिवन टू क्लॉडिया गोल्डीन. एंड वाई क्लॉडिया गोल्डीन इज़ गॉट द नोबेल प्राइज़ दिस ईयर? उन्होंने एक रिसर्च करी. रिसर्च से पता करा कि यहाँ पे इन जनरल जो वेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू मेल एंड फीमेल डिस्पाइट हैविंग द सेम वर्क, वो बहुत कम है. So Claudia Goldin that was awarded for her work that explaining why women earn less money than men even when they do the same work. Sadly, अगर बात करें केयर गिविंग वर्क की, that is not valued in the money economy. And the millions of women providing domestic services and millions more who are providing care in the community, आशा वर्कर्स. आशा वर्कर्स माय फ्रेंड्स, आपने कोविड के टाइम में उनकी कितनी बड़ी रोल थी, दैट इज़ इंडिया इज़ विटनेस फॉर दैट. जो आशा वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स को आप इसके अगर फुल फॉर्म जानना है कोशिश करें. बेसिकली एक सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं. इसका फुल फॉर्म अगर होता है तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसे कहते हैं सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. आशा वर्कर्स बेसिकली आंगनबाड़ी जो होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं वहाँ पे. एंड जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, दैट इज़ अ वी कैन से रूरल इकॉनमी के लिए अच्छा है, क्योंकि गांव-गांव में आप हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है as compared to the urban areas. So the ASHA workers and Anganwadi workers in the primary health and education are very poorly paid. अभी यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट कॉल्ड अपन द G20 टू सपोर्ट इंडियन सेंट्रिक डेवलपमेंट गोइंग बियॉन्ड. और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, दैट इज अचीव्ड बाय 2030 टू कवर अ रेंज ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. So the value of caring. Masculine view of economy is a production machine driven by competition. A feminine view of economy society is human being who care. So that is a paradigm change is required in economics. Paradigm change always require a power shift, which is difficult because people with power will not let go. Money gives power and political authority gives power, and formal education and science and Nobel Prize that gives power too. In fact, this is the basis of the caste system of power in all societies. Those with the power of money, authority and formal higher educations are to upper caste in the hierarchy. So they form a coalitions among themselves and ostensibly to make life better for the common people who are say cannot govern themselves and must be developed. So अब जो समय है, it is time for the powers above the humbly listen to the people to learn from them. Women must be given freedom not just for the promoted with male dominated institution, but rather to shape better family spirit institution for governance, and moreover local communities that must be given more powers for designing and implementing inclusive and sustainable solutions to their problems. Without such fundamental institution reforms, the vision of Vasudev Kutum, one family and one earth, will soon fade along with the G20 बैनर्स के साथ ये ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ माई फ्रेंड, जो हम लिखते हैं, अभी विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट विमेन मस्ट बी गिवन फ्रीडम नॉट जस्ट फॉर द प्रमोटेड विद इन मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, but rather to shape better family spirit institution for governance. So without these things, the vision that was for the G20, Vasudev Kutumb, one family, one earth, one future, that will soon fade along with the G20 banners itself. So this is the things that we should keep in mind, like what was the role that is playing by the government of India and how the caregiving work should be valued for the money economy. So now
हियर इज द क्विक टिप्स, और आज के क्विक टिप्स में है आपके पास रिमेंबरिंग द किंग्स हु एम्ब्रेस बुद्धिज्म। इसके लिए नेमोनिक्स क्या है, फादर एंड अंकल ब्रॉट किड्स होम। सो बुद्धिज्म जो है उसके लिए फायान, अशोका, उदयन, बिंबिसार, खारवेला एंड हर्षा, इनको आप नेमोनिक्स से देख सकते हो। यहाँ पे एफ स्टैंड फॉर फादर, ए एंड में फर्स्ट लेटर का आप देखें एंड, यू स्टैंड फॉर हियर इज उदयन, एंड बी फॉर बिंबिसार, एंड के फॉर खारवेला, एंड एच फॉर हर्षा। तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं, हु एम्ब्रेस इस्लाम, सॉरी बुद्धिज्म। उसके बाद अगर आप देखें टाइप्स ऑफ रिट्स, रिट्स क्या होता है माय फ्रेंड्स, द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। एक हमारा आर्टिकल 32 है एंड अनदर इज आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। तो हमारे 5 टाइप के रिट्स होते हैं, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, हेबिस कॉर्पस एंड क्यू वारंटो। इसके लिए आप याद रखें इसे CPM हेडक्वार्टर्स। C स्टैंड फॉर सर्शियरी, P स्टैंड फॉर प्रोहिबिशन, M फॉर मैंडमस, एंड हेडक्वार्टर्स में क्या है, H फॉर द हेबिस कॉर्पस एंड Q फॉर क्यू वारंटो। And here we have questions of the day, and the very first question is World Energy Outlook report is released by, पहला आपका IREA which is International Renewable Energy Agency, World Economic Forum, International Energy Agency and World Trade Organization. Recently a report published हुई and we had discussed in the news analysis. Try to solve. So the right answer is option C1. So the world IEA, okay. प्रार्थना IEA which means, ये देखो आपका है ना यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। हाँ, IEA बिल्कुल सही है आंसर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। Third, you have given the correct answer. So International Energy Agency, that is India, is expected to have the highest growth in energy demand over the next 3 decades, and however India industrial sector that will emit 30% less CO2 by 2030, and जो passenger cars हैं that will emit 25% less CO2 per kilometer driven. उसके बाद है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, जिससे हम कहते हैं फसाई। जितने भी आप प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं खाने के लिए, उसमें आप देखते हैं कि फसाई की लोगो होती है, विच इज FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट एस्टैब्लिश अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड ये आंसर गलत था प्रार्थना, बट डोंट वरी, आपका एफर्ट्स अच्छा है। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश होती 2008 में, हेडक्वार्टर्स की न्यू दिल्ली में है, एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड दैट वाज अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, एस्टैब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। थर्ड है नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। हाउ द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? बाय कमिटी ऑफ पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम स्वीडन। अगर स्टेटमेंट को आप अच्छे से देखें तो विल गॉट टू नो कि इसके आंसर्स बहुत इजी हैं। नोबेल प्राइज अवार्ड एनुअली टू एनीवन हु नॉमिनेट, देखो अब यहाँ पे एनीवन है, हु नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर द प्राइज, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। सी तो आपका नहीं हो सकता। बेस्ड ऑन अ पर्सन्स एज, माय फ्रेंड्स, किसी भी अवार्ड के लिए यहाँ पे एज तो नहीं हो सकता, सोली बेस्ड ऑन द पर्सन्स एज और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये पॉसिबल नहीं है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द A एंड B ऑप्शन। पहला आपका ऑप्शन है सर व्हाट इज द व्हाट दिस इज व्हाट आई सेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या अच्छा आपका है, एक सेकेंड, अच्छा आपने C ऑप्शन दिया प्रार्थना, या C ऑप्शन इज करेक्ट वन प्रार्थना, दैट इज गुड वन, या आई गॉट इट, C आपका करेक्ट आंसर था। आई थॉट यू आर आस्किंग B ऑप्शन, आप B ऑप्शन कह रहे, या C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इन शॉर्ट अगर आप यू कैन अप्लाई हियर POE विच इज़ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो
अपन पहले ऐसे क्वेश्चंस को देख के नहीं डरना कि यार क्या क्या पूछ दिया उन्होंने, एक तो बहुत लेंदी सा है। फर्स्ट रीड इट वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे एनीवन जो है इसकी वजह से आपने सी को आपने एलिमिनेट किया। डी ऑप्शन में देखो पर्सन्स एज एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट कैन नॉट बी अ पैरामीटर्स जो हम किसी अवार्ड को दें, तो डी एंड सी एंड डी दैट वी कैन इजिली एलिमिनेटेड। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी ऑप्शन। देखो ए ऑप्शन क्या है, कमिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, राइट, ये तो समथिंग दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम स्वीडन ये डिसाइड नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस वी आर लेफ्ट विद द बी ऑप्शन विच इज द करेक्ट वन। So Nobel Prize giving in the contribution of in the fields of physics, chemistry, medicine, literature, economic science and peace. So आपका B is the right answer. And in India, elephant reserve and corridors have legal sanctity under the, और ये आता है किसी none of the above इसका आंसर है। Elephant reserves and corridors have no legal sanctity under any law including the Wildlife Protection Act 1972. And here it is the last question, which is Project Udbhav that was mentioned in the news sometimes is associated with. Udbhav एक हिंदी का वर्ड है, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है प्रार्थना, वेल डन, गुड जॉब। डिफेंस सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। Project Udbhav that has been launched by the Indian Defense Minister aiming to integrate ancient Indian strategic wisdom into modern military pedagogy. So the project in collaboration with the USI, which is United Service Institution of India, that seeks to create an indigenous strategic vocabulary based on Indian philosophy and culture. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. And thank you so much, Prathna, for joining with us. So we'll meet you tomorrow for the next YouTube analysis session. Please share this video to your friends also. And आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you so much for joining with us. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें।